Very good evening, faculty members present other side in the polytechnics and my dear students. Today we are going to take up a topic on heating, ventilation and air conditioning. This is one of the very important topic in building services and interior services. This is a topic where we deal with interior quality of air related to heating and related to air conditioning, and sometimes only the ventilation of the interior spaces. Before starting this topic, I would like to give you some idea about what kind of HVAC system we need for our buildings. Before going for that, we should have designed our building in such a way that we are supposed to have little requirement of this mechanical system of HVAC. So for this, I'll give you some idea on the board. Can I have this pad on this? Suppose we are having our building, this is just for example, and we are having sun direction on this side. To protect our building, we have various methods by heating. So one is orientation of the building. By orienting our building in a way, we can save lot of energy. If we are orienting our building this so that our width is east-west and the longer side of the building is on north side and the south side. So this way, what happens, our sun rises in the east and goes into west direction via taking a route towards the south. Here, this is one of the important fact is the angle of the sun is 81 degrees in summer and 57 degrees in winters. So that way you are going to have lot of sun in winters inside the building from south direction. So it will give you lot of heat inside your building. And because of the 81 degrees sun in summers, we are going to have lesser sun
from the south side, and you can see here that the north side is not having the sun. So always we are going to have no sun from north side. So this is the best possible direction where we should have maximum openings or maximum windows in the north side. The same way we can have on the south side, we can have maximum openings, but with the provision of a sunshade. This sunshade will protect sun in case of summers when the angle is 81 degrees, and in case of winters when the angle is at 57 degrees, this sunshade will not block the sun enter into the building. And if the width of the building is east side and the west side, which are having lesser dimension on east and west, so this would be the lesser dimension, and north and south will have broader face. So being lesser side on the west, in the evening time we will have less sun inside the building, and we should try to design our building in such a way that west side should have maximum dead area. So that we are going to get it blocked from the side. The next way, what we can have to have our interior of the building, that is height. If we are having higher height inside the building, we will have much more space to accommodate hot air above the living area. It means if we have the man height is like this, so the hot air will collect above the man height. So they'll not feel much heat inside the building. So this is how, by designing our building little ceiling height little higher, we can have better interior environment. Another thing, we should have opening in such a direction so we are getting cross ventilation. So maximum the cross ventilation is, and better the environment inside the building is. Another thing what we can do to our to have lesser heat inside the building, that is rooftop. The sun hits directly on the rooftop, so we have protective layer on the roofs. That is good quality terracing. For terracing, we can have brick bed coba or mud fusca, or insulation sheet can also be utilized for having better terracing. Another way to protect our interior air by heating is to provide a painted surface with a reflective paint. This reflective paint will not allow heat to dissipate from the wall or from the ceiling
to the interior space. So this is before going to the mechanical system, which is called as HVAC, heating, ventilation and air conditioning. Before going for mechanical system, we should design our building in such a way that we require lesser HVAC system. So this was a very important fact, how we can save energy. These days we are going to utilize green building concepts in our many of the buildings, and we have to follow these green concepts to save our environment as well. Dear students, this HVAC refers to heating, ventilation and air conditioning, which can be used in building to maintain internal air quality, regulate internal temperature, regulate internal humidity. These are the three basic factors which have to regulate. Internal air quality can be maintained by a combination of introducing fresh air into the building, extracting stale air. It means जो foul air होती है उसको हमें fresh air से replace करना है. And by filtration, अगर हमने बीच में कुछ filters utilize किए हुए हैं तो by the filters we can have better air quality inside our building. Ventilation may be natural, mechanical or mixed mode, a hybrid system. Internal temperatures can be regulated by heating and cooling. Typically, this is achieved by heated water or sometimes steam and chilled water that is generated by boilers and chiller sand, then used in heating coils and cooling coils as part of the ventilation system. Alternatively, hot water may be used to supply through radiators. Humidity can be regulated by ventilation, dehumidification and humidification. Dehumidification is often provided alongside cooling. As cooling air reduces the amount of moisture it is able to hold, resulting in condensation. Very broadly, HVAC system can be centralized in a building or local to the space they are serving, or a combination of both. For example, local air handling units supplied by centrally generated cooling. They may also be connected to a wider district heating or cooling network. They may be integrated with heating, ventilation, and air conditioning provided by a single system. For example, air handling units connected to ductwork, or they may be a combination of separate system, for example, mechanical ventilation, but with radiators for heating and local comfort cooling units. In short, HVAC, heating, ventilation and air conditioning, is the technology of indoor and vehicular environmental comfort. Its air is to provide thermal comfort and acceptable indoor air quality. अगर हम बात करें ओवरऑल HVAC सिस्टम की, तो हमारा केवल एक ही पर्पस है कि जो हमारी इंडोर क्वालिटी है उस इंडोर क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है बाय प्रोवाइडिंग थर्मल कंफर्ट. थर्मल कंफर्ट में दोनों चीज़ें आती हैं, हम उसकी हीटिंग भी करते हैं और उस एयर की कंडीशनिंग भी करते हैं, सो दैट कि वो टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग एक एक्सेप्टेबल लेवल पे हो. फॉर एयर कंडीशनिंग 22 degree centigrade is the acceptable level. At this temperature we feel very comfortable. HVAC is important in design of medium to large industrial and office buildings.
such as skyscrapers, what we call multi-story buildings, and in marine environment, like if we have to design any building or any interior space inside the water, then the only way is to provide HVAC system so that a person who has to perform or live in the below the water will feel comfortable. Such as aquariums, and where safe and healthy building conditions are required with respect to temperature and humidity, using fresh air from outdoors. So this is in short HVAC. Now we will discuss ventilating. Ventilating is the process of changing or replacing air in any space to provide high indoor air quality. That is to control temperature, replenish oxygen, or remove moisture, odor, smoke, heat, dust, airborne bacteria, and carbon dioxide. तो वेंटिलेशन के माध्यम से हम एक अच्छी एयर क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हम उसके अंदर बैक्टीरियाज है या डस्ट है या स्मोक है, इन सबको रिमूव करने का एक सिस्टम जनरेट करते हैं, सो दैट कि जो लोग हैं उस स्पेस के अंदर जो रह रहे हैं, जो उनके लिए लिविंग स्पेस है, उस लिविंग स्पेस में दे आर गेटिंग बेटर इंडोर एयर क्वालिटी. Ventilation is used to remove unpleasant smells and excessive moisture. Introducing outside air to keep interior building air circulating and to prevent stagnation of interior air. तो इसके वेंटिलेशन के माध्यम से हम इंटीरियर स्पेस के अंदर की जो एयर है उसका एक सर्कुलेशन बनाए रहते हैं, ताकि एक एयर जो उसके अंदर है वो कंटामिनेटेड होने से पहले हम उसको चेंज कर सकें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉस्पिटल एज वेल. हॉस्पिटल्स में कंटामिनेशन ऑफ एयर की वजह से वहाँ पर जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस लग जाते हैं. तो वो इन्फेक्टेड एयर को हमें बार बार क्लियर करना होता है और थ्रू फिल्टर्स फ्रेश एयर उसके अंदर प्रोवाइड करनी होती है. तो वहाँ पर ये हमारा HVAC सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हॉस्पिटल्स. वेंटिलेशन इंक्लूड्स बोथ द एक्सचेंज ऑफ एयर टू द आउटसाइड एज वेल एज सर्कुलेशन ऑफ एयर विद इन द बिल्डिंग. Humidity is one of a major aspect. We are living in tropical climate where we are having all types of season around the year. We are having rainy season, we are having summer, we are having winter season. But most of the time we feel we are living in summer zone. For a larger part of the year we are having summers, we have to face heat, and while rainy season we have to face humidity. So one of the major aspect of HVAC is to provide comfortable air at a comfortable temperature, which I earlier mentioned 22 degrees centigrade, with proper amount of humidity in that air. So sometimes to provide humidity we have to
have higher moisture level in the air, or sometimes we have to go for the dehumidification. We have to remove the moisture from the air to give a comfortable air quality. So air will generally include moisture in the form of water vapor. One of the other factors is relative humidity, which is being measured in percentage. हम सब लोग पढ़ते हैं कि आज हमारी ह्यूमिडिटी 65% है या ह्यूमिडिटी 90% है या 97% तक पहुंच गई है. तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी का लेवल परसेंटेज में हायर पहुंचता जाता है, वी फील डिस्कम्फर्ट विद द टेम्परेचर. बट टू हैव moderate humidity in the air, that is also very important. We should have humidity level somewhere around 50 to 55%. So that will always be needed. अगर हम किसी रेगिस्तान वगैरह में चले जाए तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल गिर कर 40 to 45% तक पहुँच जाता है, तो वहाँ पे भी फील डिस्कम्फर्ट. Air handling unit. An air handling unit, most of the times abbreviated to AHU, this is called in short AHU, or air handler, is a central air conditioner station that handles the air that usually will be supplied into the building by the ventilation ductwork connected to the AHU. कुछ हम डक्ट्स के माध्यम से उस एयर को, जिसको हमने कूलिंग किया हुआ है, डक्ट के माध्यम से इंडोर तक हम पहुंचाते हैं. सो यूनिट इज कॉल्ड एज AHU. हैंडलिंग द एयर मीन्स दैट द एयर विल बी डिलीवर्ड इनटू द बिल्डिंग स्पेस विथ thermohygrometric and IAQ, that is indoor air quality treatment. The accuracy of treatment will depend from the specificity of each project, like offices, schools, swimming pools, factories, hotels, and industrial processes. This means the air handling unit treat the air by filtering, cooling, or heating, humidifying, or dehumidifying. So there are these three processes. One is filter, other is cooling or heating, and third one is humidification or dehumidification. So these are the basic controls which this AHU handles. There are several types of air handling units: compact, modular, residential, integrated, low profile. It means it has to be hung from the ceiling, packaged, rooftop mounted, typically on the roofs of the buildings with a special weather protection. Here we can see a basic concept of air conditioning. We have two zones. One is hot zone and the other is cool zone. So if you see, in the hot zone we are having condenser and the compressor, and in the cool zone we are having expansion valve and evaporator. And to control blow air, we are having two fans. One fan will blow towards the condenser and one fan will blow air towards the evaporator. So this is the basic diagram for air conditioning system. In this slide, you can see one thing, that the red part which is showing the condenser part, this will be the outside the building, so that the hot air will go outside the building, and the blue part, you can see the fan will blow cool air inside the building.
So that way we are going to maintain the temperature inside the building. For a building, it is very important to know which type of unit we have to select to have air conditioning inside the building. So there are various types of air conditioning units. One is centrally air conditioned, which is called as packaged ductable unit. It is also called as packaged ductable unit. And this comes with two types of system. One is water cooled system and other is air cooled system. Typically we are using, most of the time we are using air cooled system. Water cooled system is nowadays we are almost based on air cooled system. We are not using water cooled systems these days in most of the buildings. Only in bigger industrial plants we are using water cooled systems, but in the living spaces we are using air cooled systems. Other type of air conditioning units are compact units. In this category, compact units, we have window type air conditioners, which I think most of us see in our residential buildings, and where we have small living spaces, we use window type, and we are using split type units as well. In our residential living spaces, in our restaurants, in our offices, in our showrooms, we are using most of the split units where we are not having exposed surface. It means हमारे पास कोई ऐसी surface नहीं है जहाँ बाहर की ओर हम उस wall के बाहर की ओर हम hot air को थ्रो कर सकें. अगर हमारा काफ़ी बड़ा एरिया है और वो एरिया तीन तरफ से घिरा हुआ है अदर बिल्डिंग से, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इंडोर में एक इंडोर यूनिट लगा सकें और उसका जो हॉट एयर है उसको वो हम एक आउटडोर यूनिट अलग से रखें, उसके माध्यम से हम उसकी हॉट एयर को बाहर फेंक सकें. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्प्लिट टाइप सिस्टम. स्प्लिट टाइप सिस्टम में वी हैव वेरियस काइंड ऑफ यूनिट्स फॉर आर वेरियस एप्लीकेशंस. इंटीरियर्स के लिए ख़ास तौर से हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पर कौन सी यूनिट लगानी है. जैसे हम वॉल माउंटेड यूनिट भी लगा सकते हैं, हम फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट का चुनाव कर सकते हैं. अदर वन इज सीलिंग माउंटेड यूनिट वेयर वी डोंट हैव स्पेस ऑन द फ्लोर एंड वी डोंट वांट टू स्पॉइल आवर एलिवेशन ऑफ द वॉल्स, देन वी कैन हैव सीलिंग माउंटेड यूनिट्स. सीलिंग माउंटेड यूनिट में एक और फ़ायदा है कि सीलिंग माउंटेड यूनिट के माध्यम से हम स्पेस को बेटर वे में कूलिंग, अगर हमारे बीच का एरिया स्पेस काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी बड़ी स्पेस है और बीच के एरिया में कूल एयर नहीं पहुंच सकती वॉल माउंटेड यूनिट से, देन सीलिंग माउंटेड यूनिट के माध्यम से हम उसमें बीच के एरिया में भी कूल एयर पहुंचा सकते हैं. सीलिंग माउंटेड यूनिट में वी हैव कैसेट टाइप यूनिट एंड मिनी डक्टेबल यूनिट्स. मिनी डक्टेबल यूनिट्स हमारे हर जोन में कूल एयर पहुंचाने के लिए दीज आर वेरी इफेक्टिव. लाइक अगर एक ऑफिस की बात करें, एक ऑफिस में हमारे कॉरपोरेट ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस का फ्लोर एरिया इफ़ वी आर हैविंग अराउंड 2000 to 3000 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर एरिया, जिसमें लो हाइट पार्टीशन के माध्यम से हमारे जितने भी कॉरपोरेट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो उसमें बैठे हुए हैं. अलग अलग स्मॉल केबिन्स विच आर नॉट कवर्ड, विच आर having low height partition up to 4 feet or 5 feet. So then with the help of mini ductable split type system, we can provide cool air on the top of every seat. And the last one is portable type. This is one of the
लेटेस्ट इन्वेंशन इन दिस एयर कंडीशनिंग. पोर्टेबल टाइप यूनिट का एडवांटेज ये है कि वी कैन हैव दिस पोर्टेबल टाइप यूनिट in one space, and the same time if we want to use it in other space, then we can shift this portable type air conditioner to the other space. बाकी हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं, विंडो टाइप हैं या स्प्लिट टाइप हैं, इसमें वी हैव टू फिक्स इट. एक बार हमने जिस स्पेस में इसको फिक्स कर दिया, हम उसी स्पेस को कूलिंग करने के लिए या हीटिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. हम दूसरी स्पेस में इसको नहीं ले जा सकते. लेकिन पोर्टेबल टाइप के साथ ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं विद फ्यू प्रोविजंस. नाउ वी विल हैव we will see these all type of air conditioner through few pictures. This is known as AHU, air handling unit. जनरली जो हमारी लार्ज बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं या इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं या लार्ज ऑफिसेज, लार्ज कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, उसमें दिस AHU इज़ इंस्टॉल्ड एट द सीलिंग टॉप के ऊपर ये AHU इंस्टॉल हो जाता है और थ्रू पाइपलाइंस वी रिसीव द कंडेंस्ड एयर इनसाइड द बिल्डिंग फ्रॉम वेयर वी डिस्ट्रीब्यूट all the condensed air through ducts to various parts of the building. जहाँ पर हमारा फ्लोर एरिया काफ़ी ज़्यादा है और डक्ट के माध्यम से हमें एयर कंडीशनड एयर सब अलग अलग स्पेसेस में पहुँचानी है. तो इस तरीके की लार्ज एयर हैंडलिंग यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन वेरियस किलोवाट्स, कितनी किलोवाट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट हम टेरेस के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं और वहाँ से डक्ट के माध्यम से अलग अलग फ्लोर पे या एक ही फ्लोर पे अलग अलग स्पेसेस में डक्ट के माध्यम से हम कूल एयर पहुंचा देते हैं. दिस इज मिनी डक्टेबल एयर हैंडलिंग यूनिट. इसमें जो आप एक माउथ पीस देख रहे हैं, ग्रिल पीस जहां दिखाई दे रहा है, ग्रिल माउथ पीस के माध्यम से डक्ट को जोड़ के हम एक छोटे फ्लोर एरिया में डक्ट के माध्यम से कूल एयर अलग अलग स्पेसेस तक पहुंचा सकते हैं. दिस इज अगेन द सेम मिनी पोर्टेबल टाइप मिनी डक्टेबल एयर हैंडलिंग यूनिट. दूसरा डिज़ाइन है ये इसका. ये मिनी डक्टेबल एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर का पार्ट आप देख सकते हैं. जैसा हमने पहले देखा था कि एक लार्ज एयर हैंडलिंग यूनिट देखी थी जो सीलिंग माउंटेड थी, जो रूफ टॉप माउंटेड थी. अब ये हम सीलिंग माउंटेड यूनिट है मिनी डक्टेबल. इसके अंदर का पार्ट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं. मोटर है, फैन है, एयर ब्लोइंग जो डक्ट साइड है वहाँ से एयर ब्लो करके डक्ट के माध्यम से उस कूल एयर को हम अलग अलग लिविंग एरियाज़ में पहुँचा सकते हैं. ये आप देख सकते हैं इस इमेज में. मिनी डक्टेबल एयर यूनिट के माध्यम से ये उससे निकलने वाली डक्ट्स हैं, जिन डक्ट्स को फर्दर डक्ट्स में लॉस ना हो, एनर्जी लॉस ना हो, तो इसलिए डक्ट्स को कवर करने के लिए उसके ऊपर ग्लास वूल या पॉलीस्टाइरिलीन शीट्स आती हैं, उन शीट्स को रैप करके जो जीआई की डक्ट्स का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उस डक्ट के स्ट्रक्चर को कवर कर देते हैं सो दैट उसमें से कोई भी हीट लॉस ना हो. इस इमेज में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे. ये थ्रू इस यू कैन सी मिनी डक्टेबल एयर कंडीशनर. एट द सेंटर वी आर हैविंग दिस मिनी डक्टेबल एयर कंडीशनर एंड थ्रू डक्ट्स वी आर covering other 4 or 5 spaces. This image is showing return air grill and the cool air grills. इस तरीके की ग्रिल्स आपको
किसी बैंक्वेट हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बड़े लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिस में इस तरीके की ग्रिल्स आपको लगी हुई दिख जाएंगी। इसमें जो रेक्टेंगुलर साइज़ की लंबी और पतली ग्रिल्स हैं, इन ग्रिल के माध्यम से कूल एयर स्पेस के अंदर पहुंचती है, और ये जो स्क्वायर ग्रिल्स आपको दिखाई दे रही हैं सीलिंग पर लगी हुई, इनके माध्यम से जो कूल एयर है वो रिटर्न जाती है और रिटर्न होके अगेन उसका टेम्परेचर फिर से मेंटेन होके फिर दोबारा से वापस स्पेस के अंदर आती है। This image is showing exposed AC ducts. Sometimes if we don't want to cover our ceiling through a false ceiling, then we can design it with the help of exposed ducts, so that we will be getting full height of the ceiling. अगर इसी जगह पर हम फॉल सीलिंग लगा के इन डक्ट्स को कवर करते तो यहाँ पर हमारी हाइट कम हो जाती। तो इसमें दोनों तरह के एडवांटेजेस हैं। इसमें हमें हाइट भी पूरी मिल जाएगी, और एक एक्सपोज डक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो दैट विल विजिबल और दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द इंटीरियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग को फॉल सीलिंग के द्वारा कवर किया गया है। उसी फॉल सीलिंग में यू कैन सी वेरियस लाइट्स, एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द कूल एयर ग्रिल्स। लेफ्ट साइड में जितनी भी ग्रिल्स लगी हुई दिख रही हैं वहाँ से कूल एयर इसके अंदर आएगी, एंड यू कैन सी फ्यू रिटर्न एयर ग्रिल्स ऑन द सीलिंग, जहाँ से एयर वापस एयर हैंडलिंग यूनिट तक पहुंचेगी और अगेन उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा, देन इट विल कम बैक थ्रू ग्रिल्स इनसाइड द स्पेस। Now after ductable air conditioning system with the help of AHU, now we are coming to the compact or packaged units. In this compact and packaged unit, one of the type is window type air conditioner. You can see in this image, this left side, this is the part which we see inside the room, and in the right side image you can see this is the part which we see outside our building, outside our room. So in the right side part you can see the hot air will come out from this right side part, and inside the grill if you see small portion of the grill which will blow cool air inside the space, and the other part if you will see a larger area of the inside part, the horizontal lines are there, it is full of horizontal lines. So from this area the return air will go back to the air conditioner unit. Here you can see in the section various parts of window AC. The left green portion is showing the inside part, inside of the room. This will be the grill inside the room. Here we have lower of the grill, and we have few control switches where we are having thermostat, fan control, and various function selector. And this green part which is showing the grill, so this is for return air, and above this you can see a fan, blower fan is shown in the section, evaporator blower. So this will blow the air inside the space.
which is connected to the fan motor. And in this section you can see the evaporator coil as well. So this evaporator coil, so there runs the cool gas inside this evaporator coil. So when a fan blows air through the evaporator coil, so that air becomes more cooler and goes inside the space. And on the back side of this, you see condenser fan. Through this condenser fan, it blows air from above the condenser coil. So it blows away all the hot air. So by this process, the hot air goes out of the building and the cool air comes within the space and goes back to the air conditioning unit by return air. In the same function, here you can see one of the type of the split air conditioner. This is a wall mounted split air conditioner. Usually we set all this wall mounted split air conditioner on the wall at a level of 7 feet to 8 feet. So this is an indoor unit which blows condensed air inside the living area, and other part is outdoor unit which is having condenser which goes outside building, and we put it here on the left side. You can see this is the outdoor unit which is connected through blue line is showing showing the cool air is going inside the blower, and this red line is showing the return hot line to the outdoor unit. Another type of the air conditioning unit is floor mounted split air conditioner. This floor mounted split air conditioner is very useful in case of like large होटल लॉबीज़, जहाँ पर हमें कुछ ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं, होटल की ऐसी लॉबीज़ हो सकती हैं जहाँ पर हाइट 3 फ्लोर 4 फ्लोर या और ज़्यादा फ्लोर तक हाइट जा रही है और हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम ऊपर से कोई डक्ट ला सकें, इवन उस लॉबी का एरिया बहुत ज़्यादा, सो दैट वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन कि हम वॉल माउंटेड स्प्लिट यूनिट लगा के वहाँ तक कूलिंग पहुँचा सकें बीच के सेंट्रल एरिया में। तब उस केस में हमारे फ्लोर माउंटेड एसी बहुत यूज़फुल है। हम बीच में इनको रख के उस लोकल एरिया में कूलिंग कर सकते हैं। दिस फ्लोर माउंटेड स्प्लिट एसीज आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में कंडेंसर होगा, वो कंडेंसर से कूल गैस ट्यूब्स के माध्यम से इस इंडोर यूनिट तक आएगी और ब्लोअर के थ्रू कूल एयर स्पेस में प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ एसी जिसमें हमारे पास सीलिंग मौजूद है, तो हम सीलिंग माउंटेड एसी अगर लगा सकते हैं बीच के लार्ज फ्लोर एरिया के बीच में हमें कूल एयर अगर प्रोवाइड नहीं है, तो वी कैन यूज़ दिस कैसेट टाइप और सीलिंग माउंटेड एयर कंडीशनर। You can see the outdoor unit which can be placed outside the building on the earth or floor, or it can also be mounted on the wall. एक के ऊपर एक करके हम कई सारी यूनिट्स भी लगा सकते हैं। अगर हमने इनसाइड कई स्प्लिट इंडोर यूनिट्स लगाई हुई है तो उनके आउटडोर यूनिट्स वॉल के ऊपर हैंग करके लगा सकते हैं। This other type of air conditioner which has been introduced very recently, few years back. This is a portable air conditioner. ये एक ऐसा एयर कंडीशनर है जिसमें
पाइप के थ्रू इसकी हॉट एयर को हम बाहर थ्रो कर रहे हैं। और जैसे कि विंडो टाइप एसी में कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों उसी के अंदर होते हैं, इवेपोरेटर एक ही यूनिट के अंदर होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी तीनों पार्ट्स इसी के अंदर हैं। केवल हॉट एयर ब्लो करने के लिए इस पाइप का यूज़ किया गया है। फ्लेक्सिबल पाइप के माध्यम से हॉट एयर हम बिल्डिंग के बाहर या हमारी लिविंग स्पेस है उसके हम बाहर पहुंचा देते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो एडवांटेज यही है कि अगर हम किसी विंडो में या वॉल में एक 4 इंच का होल के माध्यम से हॉट एयर बाहर ब्लो करने के लिए एक प्रोविज़न हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके के पोर्टेबल एयर कंडीशनर को हम दो अलग अलग लिविंग एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक ही एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हम फ्लोर पे इसको सरका सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टर्स। जैसे कि एक छोटा सा इंडोर कूलर होता है, जो डेजर्ट कूलर होते हैं इंडोर, उसी की तरह से इसको भी हम एक स्पेस से मूव करके दूसरी स्पेस में पहुंचा सकते हैं और वहाँ पर भी कूल एयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई सपोज दिस session would have given you a good idea of many types of air conditioning units available in our market and how we can utilize and use these units as per our requirement in various kind of buildings, such as living spaces of residential, working spaces like offices, showrooms, clinics, hospitals, and industrial areas, corporate offices. So this presentation, I hope you will get benefit in your studies. With this word, I'll conclude my lecture. Thank you so much. Thank you.